Good morning, everyone. Welcome to Pre-Bell with Team William on India. Today, July 5th, 2024. Please go through the disclaimer. Okay, so let's start with Nifty 50 setup. So, till today, this looks quite good. I think that the Friday there was a gap down opening, and then we failed to recover. Generally, I think the trend is like, every time after a gap down opening, you tend to recover, or there is some good recovery in the market. But broadly on Friday, what we saw was that the fall was which didn't recover. We closed at 10 days exponential moving average, that is 10 EMA. So now next level of support will be the 21 DMA. Okay. The good part was that Friday volume itna high nahi tha. The volume was below average, and as it was lesser than Thursday, so distribution DB count nahi hoga. So that was the only positive from the Friday session, that broadly the volume was on the lower side. Okay, now the most important level will be to hold the 21 DMA level. Okay, and then if we breach that level, then this 24,074, which was a bottom recently made, okay, then that becomes very very crucial. जो बजट के डे वाला बॉटम था, वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि वहां से इंट्राडे रिकवरी वाज वेरी गुड. दैट मींस देयर वाज अ ह्यूज बाइंग अराउंड दिस 24,000 टू 24,100 के जोन में. सो सिमिलरली, लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स, अगर हम और भी ज्यादा नीचे आते हैं, तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, दैट इज वन थिंग. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल विल बी टू, लाइक इफ द मार्केट कंटिन्यूज टू फॉल, ठीक है, तो 24,774, sorry, 24,074. Now, the most important thing, if we see Friday also, we had a good correction. Okay, the cut was a bit deeper one. So today, I think if we open 200, 300, 400 point lower, okay, then the most important thing will be to close above or near the 21 DMA. So जो 550 to 600 वाला zone है ना, लाइक अबव 550 और अबव 600, एटलीस्ट ये जोन में हमको बंद होना है. अगर मान लो 300 पॉइंट का गैप डाउन से खुलते हैं हम लोग 350 पॉइंट, व्हाटएवर, लाइक 50 100 पॉइंट्स हियर एंड देयर गैप डाउन, अलग बात है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वी आर रिकवरिंग, तो रिकवरी उतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट वी क्लोज वेरी क्लोज टू 21 डीएमए. नीचे से ऊपर आके, इफ वी आर क्लोजिंग एट 21 डीएमए और अबाउट 21 डीएमए, देन यू कैन कंसिडर दैट जो हमारा अप ट्रेंड का डायरेक्शन है, दैट इज स्टिल इंटैक्ट. बट इफ वी क्लोज वेल बिलो, लाइक एटलीस्ट हाफ अ परसेंट, 50 या 100 पॉइंट बिलो 21 डीएमए, then that indicates that we might see some further correction in this week. And then what I first discussed, the first level, if the correction continues to watch out, will be, so we might touch this level. And like 24, sorry, that 50 DMA is also very close. The red line is 50 DMA. वो भी बहुत क्लोज है यहाँ पे, तो वो 24,000 के अराउंड एक दो दिन में पहुंच जाएगा. So I think these two levels will be the most important to watch out in the August series. ठीक है, इसके नीचे तो we might go for a bit deeper correction, but as of now I think the most important discussions will be these levels. So अगर पॉजिटिविटी दिखानी है तो यहाँ पे बंद होना जरूरी है या इसके ऊपर. If we close below that, then we might test the lower levels. Okay, next, if we see key news, then just a second. Airtel, ONGC, Marico, Tata Cam, BEML, GSFC, these all will be reporting its numbers today. Now, if you see lot of news there today in the weekend, so CDS has reported a good number, Bank of India decent set, SBI का भी अच्छा था, NIM was around 3.35%. Okay, NII was up around 5.7%, और जो NPAs है वो थोड़े कम हुए हैं. Then broadly अगर बाकी सारे न्यूज भी देखो तो भी काफी अच्छे हैं, नॉट ओनली दीज थ्री.
राइट, दैट डिवीज का भी रिजल्ट आया था, तो उसके अर्निंग्स तो मिस हुआ था, बट उसकी जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव है और ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन हुआ है. सो अंबुजा सीमेंट is investing some 1600 crore to set up a new plant in Bihar. ठीक है. Then the government has some positive news for the infra companies because the cabinet ने 8 न्यू नेशनल हाईवेज में 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है. ठीक है. बाकी सारे कई रिजल्ट्स अच्छे थे, लाइक आईईएक्स का जुलाई का वॉल्यूम डेटा अच्छा था. ठीक है. मेड प्लस का डेटा अच्छा था, एफएल का स्टेडी था क्वार्टर. राइट. सो ब्रॉडली बहुत सारे जो डिलीवरी है वो थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ पॉजिटिव एबिटा, रेवेन्यू भी उसका अच्छा ग्रो था. ऑल कार्गो गति का पॉजिटिव था. पावर मैक ने एक नया ऑर्डर विन किया है. सो मैनी पॉजिटिव न्यूज. बट यस, ओवरऑल द मार्केट सेंटीमेंट है जो नेगेटिव है. सो दैट इज व्हाई आई डिस्कस जो निफ्टी के चार्ट में कि अगर ड्यू टू द पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव रिजल्ट अगर आज भी हम देखने को मिलते हैं, लाइक जो एयरटेल वगैरह का ओएनजीसी का रिजल्ट है, देन इफ वी सी रिकवरी, then the 550 600 will be important to watch out. Now, if you see global market, yeah, the sharp cut in the US market, no two ways about that. 1.5% on Dow, 1.8 on S&P, and minus 2.4 on Nasdaq. So Nasdaq was a bit falling more because Amazon saw the biggest drop in the 2 years. ठीक है. वो 200 DMA को कट कर दिया Amazon and it was down almost 9%. Even the other indexes were down. Few of the banking stocks performed weak. Well, Goldman was down almost 5 to 6% on Friday, so that's what dragging the market. The Kospi Nikkei down more than 4%. Shanghai just 0.4%. So Nikkei has its own problem. The Japanese stocks market is almost moving towards a bear territory. 20% का फॉल आ गया जुलाई में. इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी इन द वर्ल्ड मार्केट. ठीक है. और वहां के हाई से अभी लास्ट कुछ दिनों में इट हैज almost dropped 20%. So if we close below that 20% zone, then Japanese market will enter into the bear territory, technically bear territory. ऐसा bear market अलग है, technically bear territory में ये जाने की बात मैं कर रहा हूँ. A lot of problem that yen का जो valuations है उसका problem है. ठीक है. फिर जापान में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसकी वजह से सेल ऑफ आया है, उसका प्रॉब्लम है. And global market is also impacting the overall sentiment. Yes, the gift nifty indicates a negative opening, be around 300 350 point का negative opening हम expect कर सकते हैं निफ्टी पे. And I think in opening we might cut further, but let's see how we recover or we don't. And now the chart of the day, I think this looks quite interesting in the weaker market. So Adani Port, it has delivered really well. Okay, the results have been really consistent. The EPS growth, the sales growth, fund holding increasing. If you look at the ratings, the fundamental ratings as well as the technical ratings, everything is good. I think I just saw today morning अभी इन लोगों का जो Q1 का डेटा है, that has come out. I think July total cargo volume is up around 9.5%. Okay, and during the first 4 months of the financial year, so total cargo almost 8% grew हुआ YOY basis. ठीक है. टेक्निकली भी अच्छा है, यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ था. ठीक है. अभी रिसेंटली जो छोटा फॉल हुआ था बीच में लो वॉल्यूम पे, अभी फिर से वॉल्यूम पिकअप होने लगा है. इट्स स्टिल 2% टू पिवट. सो द इम्पोर्टेंट इज इट शुड ब्रेक आउट एंड ब्रेक आउट ऑन अ हायर वॉल्यूम. दो चीजें हैं, एक तो पिवट के ऊपर निकलना है और हायर वॉल्यूम पे निकलना है. So that becomes very crucial. So this stock can be the part of your watch list and you can do your own research analysis. And according to O'Neill, if it moves above the 1622 level on the higher volume, it qualifies into the buy zone. That's it for today's session. Thank you for joining. See you again tomorrow at 8:45 a.m.